class 9 students who are present over here in the crash course of maths on the topic area and volume. Now today we are going to take some questions related to the volume of cylinders. Let me take one question from your NCERT book. I am going to take question number 7 or 13.6 NCERT. Exercise 13.6, question number 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. आप देखिए पेंसिल ऐसे, suppose I am going to draw the figure of this question. ये आपका पेंसिल हो गया, पेंसिल के बीच में काला रंग का होता है ग्रेफाइट जिसे आप लिखते हो. Yes, sir. The diameter of the pencil is 7 millimeter. Here, given this diameter is equal to 7 millimeter. The diameter of the graphite is 1 millimeter. This diameter is 1 millimeter. The length of the pencil is 14 centimeter, which means the height of the cylinder is 14 centimeter. Find the volume of the wood and the volume of the graphite. दो चीज आपको पूछा गया है. क्या पूछा गया है? हाँ. Volume of wood and volume of graphite. So pause करो बेटा. Now here we are discussing about we have to find the area of the wood and area of the graphite. Area of the graphite we can find it directly. क्योंकि इसमें कुछ भी झंझट नहीं है. That is the cylindrical form. So for graphite, that is the cylindrical form, radius is equal to 1/2 millimeter because diameter is 1 millimeter. radius कितना हो जाएगा? 1/2. अगर तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2. 10 से डिवाइड करेंगे. हाइट कितना है बच्चों? 40 meters. Now, volume of graphite is equal to pi r square h. R is equal to 1/20 into 20. h कितना हो गया हमारा? 40. 7 2 जा 2 से कट गया ये हमारा 10. 2 11 और 2 से कट गया ये हमारा 10. कितना हो गया? 11/100. That is equal to 0.11 centimeters cube. This is the volume of the graphite. Now we have to find the volume of the wood. उसको निकालने के लिए दो स्टेप में करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालेंगे. उसमें से किसको माइनस करेंगे? वेरी गुड. Now, volume of pencil. That is equal to pi r square h. 22/7. इसका r कितना हो जाएगा बच्चों? 7/2. r is equal to 7/20 centimeter. को हमने क्या किया? 10 से डिवाइड कर दिया. हो जाएगा 7 into 7/20 into 20 और हाइट कितना हो गया हमारा? 40. ये 7 है, ये 7 कैंसिल हो गया. 7 जा 2 10 जा 2 10 जा 2 11 जा 11 7 7. अच्छा 7 7 जा 49. 49 1 जा 49. 41 9 1 जा 49 plus 4 53 upon
100 that is equal to 5.39 centimeter cube. Now volume of wood is equal to 5.39 minus 0.11. तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वुड का निकल जाएगा। Yes, sir. आपको समझ आ रहा है ना? Yes, sir. तो 9 minus 1 8, 3 minus 1 5.28 centimeter cube. Now you may ask questions from RS Agrawal if you have doubt. We have doubt questions from RS Agrawal. Exercise 15B. Question number So question number 26. 26. How many liters of water flows out of a pipe having an area cross section 5 centimeter square in 1 minute if the speed of water in the pipe is 30 centimeter per second? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। You have given a cylindrical pipe. This is a cylindrical pipe. If the speed of the water in the pipe is here 30 centimeter per second, इस पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसका रेट क्या है? 30 सेंटीमीटर पर Second. two things you are given. The area of the cross section is 5 centimeter square. ये एरिया जो है हमारा इसका एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ Circle. क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू कितना हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. How many liters of water flows out of the pipe having an area of cross section 5 centimeter square in 1 minute? अब ध्यान से देखो बच्चों, बोर्ड पर दे रहा है कि इस किनारे से अगर 1 मिनट तक पानी बहने दिया जाए इस रफ्तार से, किस रफ्तार से? 37 to 30 और सेकंड. सेकंड. इसका क्या मतलब है बच्चों? If we take the length of 30 centimeter of pipe and store that water in that length of 30 centimeter and allow that water to fall from one end of that cross section whose area is 5 centimeter square, what time does it take to come out the whole water that is stored in 30 centimeter? नहीं समझ में आया, बहुत लंबा अंग्रेजी बोल दिया मैंने. एक वो पाइप मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, जिसमें पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड. लुक एट मी बोल लड़का, देखो इधर मुझे. अच्छा ये वही लड़का है ना, क्या नाम इसका? हाँ आकिब जावेद. उस 30 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया, उसे पानी किस रफ्तार से बह रहा है? 30 सेंटीमीटर पर सेकंड. पर सेकंड मींस In 1 second 30 सेंटीमीटर के लेंथ में जो पानी इकट्ठा हुआ उतना पानी उस पाइप के एक किनारे से कितनी देर में निकलेगा? That was my question. If I stored water up to 30 centimeter in length of that pipe in which the water is flowing at the rate of 30 centimeter per second, then what time does it take to come out from that funnel? 1 second. 1 second. Now you got that point? Yes, sir. Then what is the 30 centimeter? Length. This is the height of the cylinder. This is the height of the cylinder. Now, height is equal to, here given 30 centimeter and pi r square is given 5 centimeter square. Now, the volume of water flow in 1 second is equal to volume of cylindrical pipe in the length of 30 centimeter. Very good. So pi r square h is equal
equal to 22/7 into r is pi r square is given in this much 5 into 30. 5 square कर दिया ना 5 Yes, sir. Yes, sir. centimeter cube water. अच्छा हमको we have to find the volume of water, Yes, not the sir. time. इसको ऐसे लिखेंगे. Since in 1 second pi r square h that is equal to 5 into 30 centimeter cube water flow. कितने सेकंड में निकालना है आपको? 30 seconds. 1 second. 1 second. 1 minute means 60 60 seconds. so in 60 seconds that is equal to 5 into 30 into 60 centimeter cube of water. 5 3 are 15. 15 6 are 90. 90. 1 and 2. This much centimeter cube of water flow through that pipe in 1 minute. 1 Minute. 9 meter. अरे वो भी 9 meter, okay, not 9 meter cube. If it is 90,000 only, in that is 9 meter. That is a 9,000 centimeter cube. You got this point? Yes, sir. Note it down. After that, I will take your next down. Got this?